हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। तो दोस्तों, वी कैन सी दैट मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड। चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, इन ऑल द टाइम फ्रेम्स निफ्टी इज रैलिंग प्रीटी इंप्रेसिवली। नाउ वन थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब एक मार्केट अप ट्रेंड में होता है कि वो ट्रेंड कहां तक प्रोग्रेस हुआ है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे है, कितना ओवरस्ट्रेच्ड है, कितना ओवरबॉट है, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज जब भी मार्केट एक अनचार्टेड टेरिटरी में जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनचार्टेड? जहां पे कभी ट्रेड नहीं हुआ। आई अंडरस्टैंड दैट द बुलिशनेस का कोई एंड नहीं है, मार्केट कैन गो टिल एनी एक्सटेंट, आई डू अग्री। बट कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना है कि जैसे कि देखिए आरएसआई जो है 70 के करीब है डेली चार्ट में। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो यहाँ पे वी कैन सी दैट आरएसआई इज ऑल्सो अबव 70। प्लस इसमें और एक चीज है दैट निफ्टी हैज बीन एबल टू मेक, यानी कि प्राइस जिसने हायर हाई बनाया है और आरएसआई ने लोअर हाई बनाया है, विच मींस दैट दिस इज नॉट अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। बट शायद आने वाले टाइम पे अगर रैली कंटिन्यू होती है, देन इट विल कंटिन्यू विथ लेसर मोमेंटम। मोमेंटम थोड़ा सा कम हो जाएगा इन द वीकली टाइम फ्रेम। इन द मीडियम टर्म टाइम फ्रेम यानी कि वीकली में और शायद थोड़ा सा डेली में भी एक कंसोलिडेशन में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने मिले तो कोई नई बात नहीं होगी। बिकॉज यू कैन सी दैट प्राइजेस आर ऑल्सो अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेजेस और यहाँ पे भी हमको एक हायर हाई और लोअर हाई का रिलेशन दिख रहा है आरएसआई और प्राइस के बीच में। दूसरा, अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से भी अगर देखूं दैट द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 25,440। इससे पहले 25,250 का भी रेजिस्टेंस था जो निफ्टी फ्यूचर्स ने सरपास कर दिया। द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 25,440, 450 and currently Nifty future is trading at 25,376. So we are almost 50 to 60 points closer to that resistance. और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा मंथली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस का, वो होगा 25,800। ठीक है, सो वी आर नियर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रैली यहाँ पे खत्म हो जाएगी, बट येस, at the back of the mind we should understand that there is some sort of resistance which is coming up and markets are little bit overstretched in the daily time frame. So अगर आप स्पेशली अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये कोई छोटे मोटे रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद मार्केट है और वहां पे अब बहुत ज्यादा आपने स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर दिए और एक सडन ड्रॉप आया मार्केट में, हो सकता है आपके आपके 2 या 3 स्टॉप लॉसेस एक साथ में ट्रिगर हो सकते हैं। सो यस, आई एम नॉट सेइंग डू नॉट इनिशिएट ट्रेड्स, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी कॉशियसली बुलिश बेसिकली। बैंक निफ्टी, नाउ बैंक निफ्टी यू कैन सी प्रीटी क्लियरली दैट इट्स ट्राइंग टू गो हायर। स्पेशली ये जो गैप था यहाँ पे जो फिलअप हुआ है, दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द बैंकिंग पैक। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे द ट्रेंड इज फाइन, इट इज अप। वीकली टाइम फ्रेम में कुछ खास नहीं था, अभी प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इट्स फाइन। एंड आई गेस द मेन बुलिशनेस इज कमिंग फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, स्पेशली फ्रॉम द क्लोजर ऑफ दिस गैप। सो ये हमको समझना होगा कि इन बैंक निफ्टी वेदर इट विल बी द पीएसयू बैंक्स और वेदर इट विल बी द प्राइवेट बैंक्स व्हिच विल डू द मेन स्टफ टू पुल द बैंक निफ्टी हायर। मेरे हिसाब से अगर मैं पीएसयू बैंक्स को देखूं तो पीएसयू बैंक अभी भी कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखता हूं तो यू कैन सी इन लास्ट 3-4 मंथ्स प्रीटी मच ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस। वीकली चार्ट में भी अगर आप देखोगे ज्यादा कुछ इंप्रेसिव नहीं है। इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट इफ यू कैन सी प्राइस हैज ड्रॉप, it rebounded and again it's trying to go down. So overall in a larger time frame एक consolidation चल रहा है. So I guess we cannot have much guidance from the PSU banking sector. But अगर मैं private banking sector में देखता हूँ then you can see very well that the price has closed above this gap. This is a very very important thing, and even in the monthly time frame charts the price is looking pretty much bullish. And अगर इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक बिग ग्रीन कैंडल मिलता है then there'll be a decent chance that the price will continue to go higher. But now in this entire set of stocks, in private banks में बहुत सारे stocks हैं, one stock which I can see which is looking impressive as of now is obviously ICICI Bank. ICICI Bank has been able to step up, it has been able to bounce back from this previous highs, because अगर आप ये particular set of highs को देखोगे, it was first a resistance and now it is providing a support. And इसी support से, ये देखिए ये पहले एक resistance था
और इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर गया है, और अगर अब प्राइस वापस नीचे आता है देन it will be a pretty good opportunity for the swing traders or short-term momentum traders to get in this rally in the second leg. This is the first leg. This can be the second leg. And after this correction, if the momentum starts again, then you will see the third leg of the rally happening in the ICICI Bank. Okay. Now looking at the energy pack, I should say that in the monthly time frame charts, the trend is strong. It is looking up, but we are extremely overstretched. In the weekly time frame चार्ट ट्रेंड भले ही ऊपर हो, प्राइस भले ही ऊपर जा रहा हो, बट द मोमेंटम इज लैकिंग. यू कैन सी आरएसआई गोइंग डाउन, प्राइस गोइंग अप. तो बेसिकली जो रैली में जो मोमेंटम था वो अभी गायब हो चुका है. एंड आई बिलीव एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग मच टू से, बट देयर वर टू स्टॉक्स जो मैंने शेयर किए थे, उनके ऊपर मैं वापस एक बार कमेंट करूंगा. एक जो मैंने स्टॉक शेयर किया था वो था हिंदुस्तान पेट्रोलियम. हिंदुस्तान पेट्रोलियम आई शेयर्ड समवेयर ओवर हियर एट 364 बिकॉज एक रेंज ब्रेकआउट आया था. ये मैंने काफी दिनों पहले मैंने शेयर किया था. देयर वाज अ रेंज ब्रेकआउट इन दिस स्टॉक, यू कैन सी ओवर हियर, एंड दिस रेंज ब्रेकआउट स्टिल कंटिन्यूज. आई गेस अभी भी if anyone is holding this stock, then you should continue to hold this with a trailing stop loss. And the second stock which I shared with all of you was Bharat Petroleum. So Bharat Petroleum भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी एक range breakout आया था. You can see there was a pretty nice range breakout on this day, all right, at the price of somewhere around 316, और करीबन अभी ये स्टॉक चल रहा है 357 358 पे. सो ये शायद मैंने 2-3 हफ्ते पहले शेयर किया था. अभी भी ये स्टॉक चल रहा है. सो एनीवन who is holding this stock can continue holding with a trailing stop. नाउ मेटल एक ऐसा पैक है जो मुझे लग रहा है विच इज कंप्लीटली नॉट एसोसिएटेड राइट नाउ विद निफ्टी. मतलब मेटल में एक अलग ही टाइप का प्राइस एक्शन चल रहा है. इफ यू लुक स्पेशली द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट in the monthly time frame chart rally is still continuing, all right. And if you see the daily time frame chart, आपको कुछ मैं दिखाना चाहूंगा that is really peculiar. There was a correction, a pullback, a correction, pullback, correction, and suddenly a pullback. जब ये last वाला pullback आया ना, last वाला, that time if I just convert this particular chart, you will be able to notice a lower low in the price and higher low in the RSI. So there was a positive divergence between the price and the RSI, and this gave rise to an initial pullback. Now in this initial pullback, you can see prices have pulled back, but there is not a breakout. So I believe अगर ब्रेकआउट आना है तो एक स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है, विच इज जेएसडब्ल्यू स्टील. अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील को देखोगे यहाँ पे, जेएसडब्ल्यू स्टील में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका है. सो आई गेस पोजिशनल ट्रेडर्स कैन कीप अ वॉच ऑन दिस, एंड इन फैक्ट if this stock retraces, comes down, then even swing traders can start watching this stock. But you should always understand that whenever it retraces, ऐसा ना हो कोई important support level तोड़ दे स्टॉक. ये आपको ध्यान रखना है. सेकेंड स्टॉक जो मुझे इंप्रेसिव लग रहा है in the metal pack is Hind Copper. Now ये जो स्टॉक है वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में, it's in an uptrend. Weekly time frame it has just been able to give a small breakout, just a small. So even in the weekly time frame chart the trend is up, even in the daily time frame chart the trend is up, and if you can see properly, if you use this trend line, you will be able to spot a small trend line breakout over here. So breakout हो चुका है. अगर ये particular जो हाई है 337 338, इसके ऊपर अगर क्लोज मिल जाता है, then you will be able to see some sort of momentum in this stock, especially for the positional traders. Auto pack. Auto pack अगर मैं देखूं तो मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में ट्रेंड ऊपर है, but it is overstretched. In the weekly time frame chart, yes, the trend continues, but there is no momentum. If you see in the last 4 weeks, candles are small, momentum is lacking. Even over here, you can see gap downs, second gap down, again price is retracing. So lackluster movement है, and as of now, I'm not that much interested in this pack. हाँ, मैंने एक stock share किया था, which was Ashok Leyland in my last week or last to last week, and it did rally little bit. I guess 253 वाला stock गया है करीबन 264 पे, and now it has retraced. So I believe if it goes below 245, then the positive view which was created
somewhere over here will be negated. Finance pack has been able to move up pretty nicely. If you see, especially Bajaj Finance, it has been able to give a very nice vertical rally. See this stock, it has been able to give a very nice rally. If you see Bajaj Finserv, even this stock has been able to give a very nice rally. So overall, finance pack is looking strong, but you need to identify the right stocks after this rally. If it comes down and maybe gives a pullback, then I guess traders will be able to find short-term trading opportunities in this particular sector. Consumption pack, I believe it is in an uptrend, especially in the weekly time frame chart. थोड़ा सा ज़्यादा overstretched है. In the weekly time frame chart, things are pretty strong. In the daily time frame chart also things are pretty strong, but I believe it's slightly more overstretched. थोड़ा सा consolidation यहाँ पे हो सकता है, but otherwise things look okay. बट क्या ये प्राइस पे, ये मोमेंट पे, क्या ये पर्टिकुलर सेक्टर में मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा एज अ न्यू ट्रेड? नो, आई विल वेट फॉर अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. FMCG pack, I guess my view continues to remain the same. You can see there is a higher high in the price over here and lower high in RSI. This is a negative divergence. This is not just a slowdown of momentum. This is a negative divergence. Plus, it is happening at a point where there is a decent amount of resistance present. So I guess one should be a little bit careful. Yes, I do agree that price has closed above the resistance, but कभी कभार प्राइस ऊपर क्लोज होके वापस नीचे आ जाता है. And if you see, prices are also away from moving averages. So थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा in this sector. And it's at times all right to miss few trades, but rather than getting into wrong trades, it is better to stay away. And you have so many sectors, so many stocks. You can always take positions in other sectors where you have more confidence. CNX Infra, I would say it's in an uptrend and it has been able to close this gap. Trend remains up in the weekly and in the monthly time frame chart. This is the weekly, this is the monthly time frame chart. दोनों में ही trend ऊपर है, and I believe slowly and steadily the trend will progress on the upside. IT pack मुझे लगता है कि yes, it is looking very strong in the daily time frame chart, especially in the weekly time frame chart also it looks pretty nice. And one of the stocks which I shared with all of you was Infosys. As a swing trader, it has progressed pretty nicely, but I feel that it's time that you should start trailing your stop losses pretty aggressively in this stock and even in the IT pack. I'm not saying that यहाँ पे rally रुक जाएगी and we'll top out over here, but आप clearly देख सकते हो that this has been a vertical rally and there are many stocks in this sector जहाँ पे बहुत ज़्यादा heavyweight stocks. And if you see, generally this particular sector doesn't give vertical rallies. Even if it does, then it is, you know, accompanied with a little bit of consolidation, a little bit of profit booking. But यहाँ पे relentless rally रही है, relentless upgoing rally, and there is no single red candle between this particular 18 June candle and over here. Then suddenly we have a you can say profit booking and suddenly two big green candles. And if you see the distance between the price and the moving averages, it is a bit too much. So I believe थोड़ा सा profit booking अगर आएगा, consolidation आएगा, I guess it will be good for the market. In the weekly time frame chart, trend is up, looking overstretched. Monthly time frame chart, it is looking very, very strong. Daily time frame chart थोड़ा सा I guess overstretched है, but मेरे हिसाब से consolidation आएगा, then it will be good for the sector overall. If you want the rally to continue for a very long time, if you just want one sudden rally and then a sudden big drop, then it's okay. But I generally don't like these type of rallies where you have a vertical rally and a sudden drop. Pharma pack, I guess this was one of the sectors which I had, I guess, shared with all of you 2 to 3 months back, maybe at least 2 months back. And you can see the stocks have rallied pretty nicely. About India, जिसमें मैंने शेयर किया था positive news, news नहीं, sorry, मेरा view शेयर किया था मैंने यहाँ पे. And after that, you saw such a big rally, sudden crash. But unfortunately, यहाँ पे मेरा view negate हो गया था. And after this view got negated, the stock has gone up. Similarly, I had shared with all of you Cipla. Cipla, you can see, has gone up pretty nicely in the daily time frame chart. Even Sun Pharma मैंने share किया था.
Sun Pharma also has rallied pretty nicely. There was one more stock, if you remember, which was much earlier than Cipla and Sun Pharma. It was Oro Pharma. I guess somewhere over here in April, or maybe at the end of the April, somewhere over here, 1170 or 1160. 1160 वाला stock ये 1569 पे जा चुका है. So you can see that Pharma pack has outperformed the main indices. PSC pack. In the PSC pack, as of now, I have no views. I would probably wait for a few days. And if I have any view, then I'll try to share with my new video. But as of now, I would wait and watch. Realty pack, I can say that it is slightly overstretched in the monthly time frame. In the weekly time frame chart, you can see consolidation chal raha hai, but yes, we have a support at 973. And नीचे से अगर आप देखोगे थोड़ी सी buying आ रही है. There is one stock which is king of the realty pack, and that is DLF. And if you check this stock properly, especially in the daily time frame chart, there is a range which is visible to all of you. I'll just try to highlight this range. See, this is the range which is visible to me. Okay. And swing traders should especially watch this stock very, very carefully. In case if there is a breakout in the shorter term time frame charts, like the hourly or the two hourly time frame charts, then swing traders should not miss the stock. Or the day it closes above this level, then you will see a decent amount of momentum on the upside. Mid caps. Mid caps, if you just check the weekly and the monthly time frame chart, things will be very clear that the trend is up, trend is strong, and I guess थोड़ा सा daily time frame chart में ज़्यादा overstretch हो चुका है. So consolidation अगर होगा and then उसके बाद वापस the rally continues in mid caps, it will be absolutely fine. And at the end of the video, summing it up all, I should say that Nifty थोड़ा सा overstretched है. You can see higher high in the price in the weekly time frame chart, lower high in the RSI, and we are coming near to a resistance. So especially जो swing traders हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, because अगर आप एक साथ में 2 या 3 ट्रेड इनिशिएट कर दोगे, especially when the price is near important resistances, और थोड़ा सा भी सेल ऑफ आया ना, because see the range of the stop loss in swing trading is smaller. तो छोटा सा भी प्रॉफिट बुकिंग आता है ना, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस ज्यादा होता है in comparison to a positional trader. So swing traders should be slightly careful. Wait for a few days, understand that how price is reacting when price is near that resistance. Is it falling straight away? It remains there, it consolidates and makes and closes above that resistance. If that happens, maybe you can start initiating new trades. So wait and watch क्या होता है, उसके बाद ही अपना decision लीजिए, especially if you are a swing trader. All right. And I hope this video is helpful to you to understand how markets can move in the next week. If you find it helpful, please let me know with your comments below, and try to share this video with other traders as well. Trade less, trade wisely. Thank you.